All right, so hi everyone, good afternoon. I hope that everybody is fine. This is Ritika, your chemistry educator, back at Unacademy's YouTube session. And again, we are going to have a very important session, as you all might be knowing that we are going to study about periodic table. So in our last class, we were studying about periodic table, and I hope you attended the session, you understood the whole session. If there is anything that you were not able to understand, you could always let me know in the chat box. And today we are going to take the same chapter forward. We are going to learn about some of the periodic properties. We are going to learn about the periodicity. Okay, so I hope that everybody is ready. Now before starting, let me tell you a bit about myself. So I have completed my engineering in electronics and communication and have been awarded grade A by Cambridge English ESOL. And also have been awarded competent leader by Toastmasters International. Now students, you can join us on the Telegram. You can if you need any homework help or class notes help, you can join us on our Telegram channel. You can also join the official Telegram channel of the Unacademy, and this channel, it will be giving you all the regular updates. It will be giving you all the ongoing offers. So basically, if you want to stay updated with what is happening on Unacademy, you can join these channels. Okay, so as I told you, हम लोग पढ़ने वाले हैं about the hi Kavita, hello, how are you? So as I was telling you कि हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं about the periodicity and the periodic properties. अभी ये ना बहुत important topic होता है और इस पर ना ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं. देयर कैन बी MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन, देयर कुड बी गिव रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, देयर कुड बी एक्सप्लेनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि हमारे कंसेप्ट्स क्लियर ना होने की वजह से वी आर ऑलवेज गेटिंग इन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दैट. सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पीरियोडिसिटी और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. एंड स्टे हियर, स्टे ट्यून्ड to see what are the changes that we can see in the periodic table in the groups and periods, and why do we see those changes. And if you don't understand anything, get to me in the chat box. Chalo, let us start periodicity. अभी कल हमने पढ़ा था the basics about periodic table, right? We learned about the groups. नए पीरियड्स के बारे में पढ़ा था, कितने ग्रुप्स है, कितने पीरियड्स है, क्या चेंजेस होते हैं, क्या पूरा थ्योरी रहता है, वो सब कुछ पढ़ा था. और आज से वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पीरियोडिसिटी एंड द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पीरियोडिसिटी ना स्टूडेंट्स, यू माइट हैव नोटिस, आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो पीरियोडिक टेबल है उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज होती है, दे स्टार्ट रिपीटिंग आफ्टर अ सर्टेन interval of time. For example, हमारी जो नोबल गैसेस है ना, तो हीलियम, फिर उसके बाद कुछ एलिमेंट्स आते हैं, उसके बाद आता है नियॉन. ओके, तो हीलियम की प्रॉपर्टीज कुछ नियॉन जैसी है. या फिर अगर बात करें हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो लिथियम के बाद कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स आएंगे, उसके बाद सोडियम आएगा, सोडियम के बाद कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स आएंगे, उसके बाद पोटेशियम आएगा. तो ये जो प्रॉपर्टीज होगी लिथियम की एंड सोडियम की एंड पोटेशियम की, these properties will be a kind of similar property, right? So this thing is this phenomena is known as periodicity. If we have to explain it, or if we have to put it into the words, how we can explain this particular periodicity, and before that we need to know what is meant by periodic properties. तो अभी जैसा कि हमने देखा कि we are able to see some kind of repetition in certain properties, right? तो periodic properties क्या है? These are the properties that appear at regular interval. तो फर्स्ट पॉइंट तो है कि या तो ये प्रॉपर्टीज ना रिपीट कर रही है आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, है ना, थोड़े टाइम में या थोड़े एलिमेंट्स के बाद दीज प्रॉपर्टीज आर रिपीटिंग देमसेल्फ. और अगर रिपीट नहीं कर रही है तो उनमें क्या होगा, इन विच
there is a kind of change. Okay, there is a gradual variation. अभी ग्रेजुअल वेरिएशन क्या होता है, या तो वो प्रॉपर्टी धीरे धीरे बढ़ रही है या प्रॉपर्टी धीरे धीरे कम हो रही है, मीन्स ग्रेजुअली इट इज ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो ये हमारी जो होती है, ये होती है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. एंड देन देयर इज द सेकंड वर्ड विच इज पीरियोडिसिटी. हाय अमन, हेलो, हाउ आर यू. हाँ, तो ये जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये है पीरियोडिसिटी. अब पीरियोडिसिटी क्या होता है? दिस इज द फेनोमेना ऑफ द प्रॉपर्टीज बीइंग रिपीटेड. Okay, what do we mean by periodic properties? The properties that are repeating after a certain interval, या फिर उनमें जो है ग्रेजुअल वेरिएशन है, या तो थोड़ा इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, जो भी है. Okay, and this whole phenomena it is known as periodicity. Okay, so I hope that you understood about the periodic properties and periodicity, because यही एक feature है, okay, जिस पर बेस्ड हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल द एटॉमिक रेडियस, द मेटालिक कैरेक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यस अमन, व्हाट हैपेंड, कुड यू प्लीज लेट मी नो. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाई ये जो पीरियोडिसिटी है या जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है जो अभी हमने देखा है, ये रिपीटेशन होने का रीजन ही क्या है. So can anybody tell me what is the reason? हाँ जी, what is the reason? The reason is electronic configuration. Okay, तो जो भी elements होते हैं ना, they have got the similar electronic configuration, and because of that we are seeing a repetition, we are seeing the gradual variation or similarity in the property. Okay, बात करते हैं electronic configuration से ये हो कैसे रहा है. Let's talk about the group number 1 elements. Okay, that is hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, and cesium and francium. Now if I talk about, चलो हाइड्रोजन तो एक एक्सेप्शन केस है ना. अब ये सारे एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, they all are having one electron in their valence shell, है ना. अभी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सेम तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट. सो दैट इज ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल. वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल. अभी क्या होगा, जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ना, क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं. ओके, तो सेम नहीं हो रहा है, सिमिलर होकर मतलब कि सभी के आउटरमोस्ट शेल में दे आर हैविंग वन इलेक्ट्रॉन. और जो प्रॉपर्टीज होती है मोर और लेस दे आर डिपेंडेंट ऑन दी आउटरमोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है. Okay, so because of this, because of the similar electronic configuration, the elements, they possess their properties, and this is what decides their behavior. Okay, अभी यहाँ पर we need to talk about two very important things. First आता है shells. Now what do we mean by this word shell? For example, if I talk about lithium, lithium का atomic number है 3, configuration क्या हो जाएगा 2,1. Okay, now this will be the nucleus, and this will be the first shell, this will be the second shell, and here the electrons are present, है ना. तो शेल या फिर वी कैन ऑल्सो कॉल देम ऑर्बिट. ऑर्बिट क्या है, एक सर्कुलर पाथ है फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इट विल बी रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, और रिवॉल्व करने के लिए इसको एक पाथ की जरूरत है. दिस पाथ इट इज नोन एज ऑर्बिट और शेल. ओके,
Now if I talk about the number of shells and how do they change if we are moving across a period or down a group, तो यहाँ पर again there are two things. First है हमारी across a period. Okay, across a period जैसे ही हम लोग मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर जो है इट इज इंक्रीजिंग. ओके, सो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो हमारा शेल है इट इज सेम. ओके, द शेल नंबर इज नॉट इंक्रीजिंग. ऐसा क्यों हो रहा है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू द सेकेंड पीरियड. हमारे पास एलिमेंट्स है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियो. ओके, अब यहाँ पर क्या है ना स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट द एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 in the case of नियो. इट इज नियो. ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, the electronic configuration it is like 2,1. okay, तो first shell में 2 electrons आ गए, second shell में we are having 1 electron. okay, उसी तरह से for beryllium it will be 2, 2, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7 and 8. so as we know कि एक जो ऑर्बिट है या एक जो शेल है it can accommodate the 8 electrons. okay, except the first one. तो यहाँ पर क्या है, जब तक कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आ नहीं जाते या फिर जब तक कि हमारा शेल कंप्लीटली फिल नहीं हो जाता, तब तक इट कैन एकोमोडेट मोर एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, ऑफ कोर्स 3 से 4 जा रहा है, 5 जा रहा है, 6 जा रहा है, बट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से दे आर बीइंग एकोमोडेटेड इन द सेम शेल. जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पर इन द केस ऑफ नियॉन, अब 8 से 9 नहीं जा सकता है, 9 के लिए हमें नेक्स्ट पीरियड में एंट्री लेनी होगी. सो दैट इज हैपनिंग अक्रॉस अ पीरियड. अब बात करते हैं हम डाउन अ ग्रुप. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग डाउन द ग्रुप्स? बहुत ही इजी सा एग्जांपल लेते हैं. टॉकिंग अबाउट हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी. तो यहाँ पर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है इट इज 9. जस्ट अ मिनट, इट इज 9. ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इट इज 2,7. मतलब कि हमारे पास 2 शेल्स है. क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,7. 3 shells. For bromine it is 35 and configuration will be 2, 8, 18 and 7. For iodine it will be 53, which goes like 2, 8, 18, 18, 7. और antimony का होगा 85, तो यहाँ का configuration होगा 2, 8, 18, 32, 18 and 7. Okay, तो what we can see कि जैसे ही वी आर मूविंग डाउन अ ग्रुप, नंबर ऑफ शेल, यहाँ पर कितने शेल थे, 2, यहाँ पर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, तो यहाँ हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनका जो शेल नंबर है इट इज एरिथमेटिकली इंक्रीजिंग एज वी आर मूविंग डाउन अ ग्रुप. ओके, so number of shells from left to right they remain same, from top to bottom they keep increasing arithmetically. Got it everyone? So I hope यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा. If there is anything that you haven't understood, can let me know. अब बात करते हैं next thing which is deciding the properties valency.
Now if I talk about a very common definition जो कि commonly use की जाती है books and all में, what is valency? Valency जो है it is defined as combining capacity of an atom, है ना? यही डेफिनेशन यूज करते हैं हम लोग मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स. अब ये कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? वी नो दैट जो हमारे एलिमेंट्स है या जो हमारे एटम्स है दे नीड स्टेबिलिटी, है ना? उनको स्टेबिलिटी चाहिए. तो स्टेबिलिटी के लिए क्या है? दे नीड 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. ओके, इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इट इज 2. अदरवाइज सारे एलिमेंट्स को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? दे नीड 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल. Now except the noble gases, none of the elements is having the stable configuration. Okay, सिर्फ noble gases ही है जिनके पास 8 electrons present हैं outermost shell. तो अभी क्या होगा ना, बाकी सारे elements को या तो उनको डोनेट करना होगा या उनको गेन करना होगा या उनको इलेक्ट्रॉन शेयर करना होगा in order to achieve this electronic configuration. So what can be the definition of valency? It can be written as the number of electrons an atom can donate or gain or share to have or to achieve a stable electronic configuration. Hi, hello, good evening, good afternoon, I'm sorry. Yes, तो वैलेंसी का जो नॉर्मल डेफिनेशन है कंबाइनिंग कैपेसिटी, उससे अगर हम हटकर देखें तो ये क्या है? इट इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच द एटम इज ईदर डोनेटिंग और टेकिंग और शेयरिंग. ओके, और ये रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दे नीड टू हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, अब बात करते हैं व्हाट इज द चेंजेस दैट वी आर सीइंग इन द वैलेंसी एज वी आर मूविंग अक्रॉस अ पीरियड और डाउन अ ग्रुप. ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाउन अ ग्रुप. Okay, if I talk about the elements down a group, talking about the very first group, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. अभी इन सारे एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट शेल में one electron present. Okay, so every single element in the group number 1, it has got one electron in its outermost shell. अभी बात आती है स्टेबिलिटी की. तो यहाँ पर क्या केस है इन एलिमेंट्स के साथ? देयर कैन बी 3 थिंग्स. या तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, या वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करें. राइट, नाउ इफ आई टॉक अबाउट गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्हें 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा इन ऑर्डर टू अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और डोनेट करने की बात करें तो 1 डोनेट करना होगा, है ना? तो ऑफ कोर्स जो इजी है वही it will be taken forward. So 1 electron donate करना is much better than gaining 7. तो they go for donating their 1 electron और इनका वैलेंसी हो जाता है 1, है ना? Now if I talk about down a group, तो down a group यहाँ क्योंकि सभी एलिमेंट्स के outermost shell में we are having 1 electron, तो ये क्या करेंगे? They all will be donating their 1 electron, and thus we can say that down the group valency remains same. Okay, the reason is because every element in a particular group, it is having same number of electrons in its valence shell,
and that is what gives them a same valency. Okay, hi Samriddhi, how are you? हाँ जी, so down the group I hope it is cleared. अभी हम लोग बात करेंगे about the period. Yeah, so talking about across a period, how is valency changed? Now across a period क्या हो रहा है ना, valency it is going to let us see, चलो I'll just explain it how the things are going to happen. तो let's talk about the second period. हमारे पास elements क्या है? I'm good, thank you. So it is lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. Okay, lithium की अगर हम बात करें, what is the atomic number? Its atomic number is 3, then 4, then 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Here it is neon. Okay, yeah, so these are the elements. And उसके बाद if I talk about their electronic configuration, तो हमारा lithium का configuration क्या हो जाएगा? 2,1, then 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, now talking about valency, क्या होगा across a period? First valency बढ़ेगी from 1 to 4 और फिर 4 से क्या होगा, वो कम होना चालू करेगा till 1. And noble gases we know because they are having the stable electronic configuration, तो उनको जरूरत ही नहीं है to gain any electron, to donate any electron. Okay, तो यहाँ valency it is 0. Okay, because of their stable electronic configuration, है ना. तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कैसे इतना इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है? सी, लिथियम व्हाट इट विल बी डूइंग, इट विल बी गिविंग आउट इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी हो गया 1. बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, rather than taking 6 again 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा. ओके, इन द केस ऑफ बोरॉन. अब कार्बन क्या करेगा, इट इज गोइंग टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं. 4 इट विल बी टेकिंग फ्रॉम अदर एलिमेंट्स, इट विल बी शेयरिंग एंड इट विल बी फॉर्मिंग अ बॉन्ड. अभी नाइट्रोजन की बात करें तो यह 3 कैसे हुआ? 5 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, तो 5 देने की बजाय दे विल टेक 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंसी 3 है. चाहे वो दे रहा है, ले रहा है, शेयर कर रहा है, एवरीथिंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द वैलेंसी. Again, oxygen, it has got 6 electrons in the outermost shell, so it will be preferring taking 2 electrons. तो यहाँ 2 electrons लेकर valency हो गई 2, and same case with fluorine, it will be taking 1 electron. Now, what do we get confused about over here, students? हम लोग लेते हैं fluorine का valency -1, right? अभी valency क्या होता है? As I told you, it is number of electrons gained or donated or shared. Okay. Now, how can we say the valency is -1? Because अगर हम donate करें या share करें या gain करें, it will always be taking place in the whole number. Right, -1 electron दिया है, possible नहीं है, right? 1 electron could be given, 1 electron could be taken, 1 electron could be shared. So this will be the thing. It is the charge which is positive or negative. अगर वो दे रहा है तो it will be having the positive charge. अगर वो electron ले रहा है, it will be having negative charge. Okay, so valency is always positive because it is the combining capacity, and it is the plus and minus are the charges which are over there because of the gaining or maybe giving out the electrons. So I hope that everything is clear up till here. Now these two factors are very important when we are learning about the periodic properties. Okay, and now I guess we should be starting with the periodic properties. Okay, periodic properties से पहले let me tell you about the special classes. So these are the free classes, and you need to have this Unacademy Learner app, and you can learn from your favorite educators. You can engage with educators via polls.
Also we have special doubt clearing sessions. Then you can visit the special classes by clicking on the links which are provided in the description box. Next is talking about Unacademy subscription features and why is it important. So Unacademy subscription features, it allows you to learn from your home. Then you get your access to all the courses. Sorry. Also, apart from the regular classes, you are having doubt clearing session, you are having answer writing session, and you get all the study material in the PDF format. Apart from this, you get your daily practice section, you get weekly mock tests, live quizzes, etc. etc. बात करें अगर Unacademy Plus subscription के pricing की, तो you can take any particular plan according to your choice, 2 month, 3 month, 24, 12, 36, anything, and then you can use my code. It will be giving you 10% discount. Okay, चलिए, now let us move on to the periodic properties. Okay, so we learned about the periodicity. Okay, and we already have discussed about the periodic properties, right? क्या है periodicity या periodic properties क्या है? ये जो properties है, they are going to repeat or they are going to show some gradual variation after a certain interval of time. Okay, और ये जो properties है, they are related to their electronic configuration. Okay, तो या तो वो directly या फिर indirectly they will be related to their electronic configuration, and these are known as the periodic properties. I hope that there is no problem up till here, and if there is any confusion you could please let me know. Now there are many periodic properties, लेकिन अभी हमारे कोर्स में we are going to discuss about the main 6 properties, जिसमें कि first है atomic size, then we will be learning about the metallic character, उसके बाद आता है non metallic character, then it is ionization potential, fifth one is the electron affinity, and last one is electronegativity. So these are the 6 periodic properties which are present right now in your course, and we are going to discuss about each of them one by one. तो start करते हैं atomic size से. First of all, changes से पहले तो ये पता होना important है कि होता क्या है, atomic size होती क्या है. Okay, if I talk about this, if I talk about any atom, just a minute. Okay, yes, हाँ जी. तो if I talk about any atom, see atom में क्या होता है? Okay, excuse my circle. कुछ इस तरह से हमारा जो है एटम होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है और बाकी जो शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होती है ना. तो एटॉमिक साइज क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल. तो यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस होगी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट शेल तक, इट इज नोन एज द atomic radius, या फिर we can also call it as atomic size. Okay, तो first हमारा definition तो ये वाला हो गया. How can we define it? It is the distance between the center of the atom to the outermost shell. ओके, तो किसी भी एटम का न्यूक्लियस से जो न्यूक्लियस का जो सेंटर है वहां से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक जो भी डिस्टेंस होगा,
इट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। तो ये तो हो गया सिंगल एटम के लिए। अभी बात करें अगर मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल का अगर हमको एटॉमिक डिस्टेंस निकालना है तो हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? तो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज माय मॉलिक्यूल, okay, this is a molecule. यहाँ पर क्या होगा? Of course it will be having nucleus. Okay, now in the case of molecule, it is taken as half of the internuclear distance between combined atoms. In a molecule. ओके, तो यहाँ पर ये जो हमारा इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है ये दिस वन, ओके, इसका जब हम लोग हाफ करेंगे वी विल बी गेटिंग व्हाट? वी विल बी गेटिंग दी एटॉमिक रेडियस। सो आई होप दैट दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर। ओके, ये हमारा हो जाएगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। Now talking about the units which are used to measure the atomic radius. अभी atom जो है इतना बड़ा तो है नहीं that we can measure its radius in kilometer, meter, centimeter पे भी नहीं हो सकता है, right? तो what do we need? We need very small units. Okay, atom खुद ही एक microscopic unit है ना, इतना छोटा है that we are not able to see it through our naked eyes. तो उसके लिए of course we need some other methods जो उसका जो डिस्टेंस है वो मेजर कर सके। तो हम लोग बहुत छोटी यूनिट्स को यूज करते हैं विच इज एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो है इट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, एंड इन सम केसेस वी आर आल्सो यूजिंग पिकोमीटर, एंड पिकोमीटर इट इज अगेन इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। तो ये कुछ यूनिट्स है टू मेजर दी atomic radius. Okay, atomic size, atomic radius, it is one and the same thing. अब बात करते हैं how or on what factors is the atomic size dependent on. तो हमारा जो atomic size है, just a minute. So our atomic size it is dependent on 2 factors. The very first one is number of shells, and the second one is the nuclear charge. Now before seeing how are the things changing with the number of shell or nuclear charge, we should be knowing what is meant by each. तो नंबर ऑफ शेल तो पता ही है क्या होता है, कितने शेल्स प्रेजेंट हैं इन एनी पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके, अब बात करते हैं हाउ इज नंबर ऑफ शेल डिफाइनिंग और डिसाइडिंग द साइज ऑफ द एटम। सो अभी क्या होगा, जैसे ही नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, सो व्हेन द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, इससे क्या होगा, एटम का साइज इंक्रीज होगा। Why? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने से क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। Okay, so as the number of shells are increasing, the distance between the nucleus to the outermost shell is also increasing. और अगर वो डिस्टेंस बढ़ रहा है, वही डिस्टेंस जो है हमारा एटॉमिक साइज है, तो वी कैन से दैट एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ओके, तो आई गेस दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अभी देखते हैं कि जो हमारा एटॉमिक साइज, अच्छा उसके पहले लेट अस डिस्कस अबाउट न्यूक्लियर चार्ज आल्सो। So what do we mean by the nuclear charge?
न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इट इज द पॉजिटिव चार्ज, और ये कहां पर है? इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. Okay, and what is it equal to? It is equal to number of protons. Okay, so this nuclear charge, it is the positive charge which is present in the nucleus of the atom, and it is equal to the number of the protons which are present. Protons क्या होता है? It is nothing but the atomic number. Okay, तो अभी जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो हमारे एटम की साइज जो है ना, इट विल स्टार्ट डिक्रीज है. ओके, अभी कैसे डिक्रीज हो रहा है? वी विल बी सीइंग इट इन अ व्हाइल. नाउ लेट अस सी द ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज. The first point is down a group. Now as we're moving down a group, what all things are happening? तो जैसे ही हम लोग किसी भी ग्रुप में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है. और अभी वो कैसे हो रहा है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है. ओके, और यहां पर एक और चीज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज. Now let us first try to understand what is meant by nuclear charge. Nuclear charge, as I told you, कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द एटम, इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. तो लेट्स सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा एटम है, ये शेल्स है उसके, है ना. तो न्यूक्लियर चार्ज इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अभी एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होते रहेंगे अकॉर्डिंग, है ना. Now what is going to happen? As the number of protons are going to increase, क्या करेगा? It will be pulling the electrons towards itself. Okay, we have already learned that the positive and negative charges, they attract each other. Okay, तो protons क्या करेंगे? They will try to pull the electrons towards themselves. और अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करा, ओके, लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, एंड अगर इलेक्ट्रॉन को पुल करा तो इलेक्ट्रॉन, और आई वुड से द एटॉमिक साइज, इट विल बी श्रिंकिंग अ बिट. ओके, नाउ मूविंग डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल तो इंक्रीज हो रहा है, साथ में न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है. ओके, तो अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस है कि एटॉमिक साइज बड़ी होगी. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक साइज छोटी होगी, है ना. इट विल बिकम स्मॉलर. बट नाउ इफ आई टॉक अबाउट बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स, यहाँ पर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, ये जो फैक्टर है, इट इट इज स्ट्रॉन्गर देन दिस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीमेंट. इसीलिए डाउन अ ग्रुप हमारा एटॉमिक साइज जो है, इट इज इंक्रीजिंग. ओके, give recent type of questions could be asked over here कि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज हो रहा है, तो फिर एटम की साइज इंक्रीज क्यों हो रही है? डिक्रीज व्हाई इज इट नॉट डिक्रीजिंग? तो रीजन क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों चीजें बढ़ रही है, नो कंफ्यूजन, बट द न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है, इट इज मच मोर लेस देन नंबर ऑफ शेल्स. ओके, एंड दैट इज व्हाई द नंबर ऑफ शेल और द एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग आता है हमारा अक्रॉस अ पीरियड. अभी अगेन सेम थिंग हो रहा है कि अक्रॉस अ पीरियड की अगर हम बात करें, लेट्स टेक द केस ऑफ सेकेंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन. ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है. इसका 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, नाउ अक्रॉस अ पीरियड, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ शेल तो इंक्रीज हो ही नहीं रहा है, बिकॉज ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स, it will increase, decrease. Okay, the reason is
तो आई गेस दिस प्रॉपर्टी इज वेरी मच क्लियर टू यू. अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो, you could please let me know. So what is happening down the group? The atomic size is increasing, the atomic radius is increasing, and what is happening across a period? Across a period हमारा atomic size जो है वो decrease हो रहा है. The reason is number of shell first of all increase नहीं हो रहा है. Second is न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है. न्यूक्लियर चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है. एंड पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने का ट्राई कर रहा है, पुल कर रहा है. तो क्या हो रहा है उसकी वजह से? द एटॉमिक साइज इज डिक्रीजिंग. So this is what is happening in the case of the atomic size. Okay. Now over here, just a minute. Yeah, so these are the things related to atomic size. अभी एक और चीज आती है the cation thing. ओके तो कैटायन जो होगा वो हमेशा अपने जो पेरेंट एटम है या फिर जो एटम है जिसने कुछ डोनेट या गेन नहीं किया है, उससे इट विल ऑलवेज बी स्मॉलर इन साइज. रीजन क्या है? सी इफ आई टॉक अबाउट एनी कैटायन, सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, 2,8,1. तो सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. सोडियम कैटायन की अगर हम बात करें तो इट इज 2,8. ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग? जैसे ही सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, लेकिन प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन का नंबर सेम है. प्रोटॉन का नंबर सेम है मतलब क्या हुआ? इन द केस ऑफ सोडियम कैटायन पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही रहा, लेकिन नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस वो थोड़ा सा कम हो गया. अभी पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा है तो व्हाट विल हैपन? इट विल बी एबल टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ विथ मोर फोर्स. अगर मोर फोर्स से अपनी तरफ पुल कर रहा है तो क्या हो जाएगा? द साइज ऑफ द एटम इट विल बी श्रिंकिंग, इट विल बी डिक्रीजिंग. Okay, so that is the thing, or that is the reason the cations are always smaller in the size than their parent atom. Okay, और इसी तरह से anion जो है it will be larger than the parent atom. Reason क्या हो जाएगा? anion जो है कैसे बन रहा है? It is formed by the gain of electron. Okay, अभी क्या होगा? जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही रहा, लेकिन नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा. तो उतना फोर्स से जो है एटम पुल नहीं कर पाएगा. इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर पुल है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. ओके, एंड देयरफॉर द साइज ऑफ द एटम इट विल एक्सपैंड. सो दैट इज द थिंग अबाउट द एटॉमिक साइज. एंड टॉकिंग अबाउट ऑल द बैचेस, so these are the batches which are ongoing. You can enroll yourself, you can see the detailed information about all the batches in your learner app. Okay, just download it. And also you can join the community of the educators. You can get your session notes, you can get the practice material, you can also share the feedback with your educators via polls. So if you want to join my community, you can click on the link which is provided in the description box. Next thing is Bugs Bounty. So what is Bugs Bounty? This is one of the opportunity for all of you. If you see any inappropriate content in the video, you can report it. There is this form which is provided in the description box. उसे आप use कर सकते हैं to go for it. And I hope that you might have understood every single thing जो कि हमने आज पढ़ी. If you have still not subscribed to the channel, go for it, subscribe it, like the video, share it, and let's meet in the next session to move forward with the periodic properties. Okay, so thank you, and we'll be meeting in the next class.